बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम पाक नाम से हम आज की इस कॉफ़ी विद CEO का सेशन का आगाज़ करते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ मैनेजमेंट हाउस एंड CEO क्लब पाकिस्तान, और दिस इज़ आलमोस्ट हमारा जी कोई 50th प्रोग्राम है ये। वी आर गोइंग टू हैव दिस प्रोग्राम एट मैनेजमेंट हाउस। वी आर सो लकी इनफ कि आज हमारे साथ मौजूद हैं राहील कमर साहब। He is MD, the CEO of ORIX MODARABA. He has a very vast experience of his professional learning and development. बहुत रहे बेसिकली बाय एजुकेशन इज़ एन इंजीनियर, लेकिन बाहर से भी पढ़ा और इधर से भी पढ़ा, तजर्बों से भी सीखा। तो आज हमसे एक छोटी सी एक नशिस्त होगी जिसके अंदर हम इनसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वी विल ट्राई टू गेट फ्रॉम राहील कमर साहब। राहील कमर साहब, वेलकम टू CEO क्लब एंड मैनेजमेंट हाउस। थैंक यू वेरी मच। सर, मैनेजमेंट हाउस को क्या इंप्रेशन, क्या लगा आपको? पहले सोचा था वैसे था या कुछ डिफरेंट लगा? नहीं जी, एक तो आई वाज एक्चुअली वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बिकॉज़ यूजुअली व्हेन वन हियर्स अबाउट सच एंडेवर्स वो थोड़ी सी सरकारी सी एक माइंडसेट की होती है कि जी वो बनेगा थोड़ा मे बी अप मार्केट करने के लिए, लम्स का स्टाइल कॉपी हो जाएगा in various presentations. But I was very, very pleasantly surprised, especially with the depth of interest that you've shown, the things that you've put up, and things like the artists' galleries and all that stuff. जो हमारी cultural चीजें. Thank you, Raheel, for giving this your remarks about management house, because it's the executive learning, the real terms executive learning institute of Pakistan. Raheel sir, just over to you, sir. Just share with you with our audience, with our readers, with our people who are watching this exclusive success interviews named Coffee with CEO. सर, अपनी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा, अपनी चैलेंजेस अर्ली लाइफ में आपने क्या देखे पीगा, और हाउ यू एंडेड अप एज अ माशाल्लाह यू आर लीडिंग एंड स्टीयरिंग अ बिग कंपनी ORIX MODARABA, सर। If one was to ask in terms of क्या सोचा था और क्या किधर आप पहुंच गए, तो I don't think anybody actually plans for where you end up. ऐसे ही होता है। So I think the trick is to make the best of whatever hand life deals you and just go on and create, some positivity in that. Background ये जी कि I belong to a Fauji family. Various जगहों पे schooling हुई, various जगहों पे वो हुआ। की डिग्री इंजीनियरिंग की थी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर की थी। Then I went to the US, got an MBA. Came back. MBA किस यूनिवर्सिटी से किया? मैंने जी Illinois Institute of Technology से किया, in operations management and finance. माशाल्लाह. Initially, I had no inclination to work in finance. Okay. I wanted to build factories and essentially design the factory of the future and all that stuff. And then somehow ended up working for project financing, and then from project financing into investment banking. And from investment banking to corporate banking, and then Islamic banking, and then eventually became CEO of MODARABA. So that's how the whole journey went. तो इस सारी जर्नी में आपने बताया कि एक अच्छा आपको एक फैमिली बैकग्राउंड मिला, एक अच्छी स्कूलिंग मिली। जी जी। तो लाइफ में कोई डिफिकल्ट टाइम, कोई चैलेंजिंग टाइम फेस किया? देखिए, डिफिकल्ट टाइम्स तो हमेशा होते हैं। डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं, फैमिली रिलेटेड भी डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं, फाइनेंशियली भी डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं, वेरियस चीज़ें होती हैं। ठीक। I lost my father at a very young age, but then obviously made up in a sense. You can never sort of fill that gap, but you can always use a moment of stress for your own strength, and that's how things happened. So basically इस तरह के challenges हैं। Various work के दौरान भी challenges होते हैं। कुछ जगहों पे आप fit in हो पाते हैं, कुछ जगहों पे fit in नहीं हो पाते with the culture। इस तरह के issues भी होते हैं। Also, I've always liked challenges. So I'm perhaps one of the few people in Pakistan who've sold a bank and who've bought a bank. And the company that I work in right now sold it from the perspective of the last group, and am now running it from the perspective of the buyer. And all of these things were challenges. Setting up new entities,
तो इस तरह के challenges आते गए, फिर काम चलता गया। राहिल साहब, ये बताइए कि एक CEO की जब पोजीशन पे आपने लैंड किया और माशाल्लाह स्टीयर किया और कर रहे हैं, तो एक CEO को क्या यूजुअली HR के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से क्या क्रिटिकल चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए और ओवरकम किए? देखिए, पहले तो इन माय व्यू माइंडसेट चेंज चाहिए होता है आपको। ओके। बिकॉज आई हैव ऑलवेज रन बिजनेसेस, यू नो, व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ MNC बैंकिंग, यू आर ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ बिजनेस, विच मीन्स कि आपने बिजनेस को एक देखना है एक पर्टिकुलर तरीके से, और गवर्नेंस जो है वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। व्हेन यू बिकम अ CEO, आपको पहली जो हैट पहननी पड़ती है वो गवर्नेंस की पहननी पड़ती है, बिकॉज यू आर देन द मैनेजर ऑफ द रेपुटेशनल रिस्क ऑफ द एंटिटी। उसके बाद फिर आपको देखना पड़ता है कि आपका ह्यूमन कैपिटल एडिक्वेट है टू रन इट और नॉट। व्हेन यू रन अ बिजनेस, व्हाट यू डू इज यू कॉल अप द HR गाय एंड यू से कि यार ये मुझे 10 RMs रखने हैं, 5 ये रखने हैं, 6 एनालिस्ट रखने हैं, इसका कोई बंदोबस्त करो। When you become a CEO, it's your problem. True. So the mindset has to change. The second thing is then you have to tone yourself down a bit in terms of aggression, because when you run a business, you're running for a net profit line. Baki cheezein secondary ho gayi. When you're a CEO, you're looking at the whole thing right across. And then you're also managing the board, and you're managing the will and the goodwill of the shareholders, regulators, shareholders, boards. वो है, that comes through a very, very changed skill set. True. So that's the first thing that one. The first is mindset, then a skill set. Yep. And the third one, if you allow me, that is a value set. The value set, yes, but I suppose generally, if you have a very, very good set of values initially, you can sort of migrate that onto whatever you do at the end also. True. CEOs are the leaders. Actually, he is a leader and of this company. How you define leadership? Raheel Qamar की definition of leadership क्या है? Leadership ये है जी कि कोई बंदा जो आपके साथ काम करता हो या आपकी बात सुनता हो, वो बाइन करे जो आप उसको कह रहे हैं, जो सुन रहा है। It's not about see, there are 3 or 4 different types of leaderships. Okay. One is a leadership where you look at a guy or a खातून and you say कि जी मैंने इनकी तरह बनना है। वो बहुत आसान तरीका होता है। Maybe आप उस तरह के हेयर स्टाइल बना लेंगे, maybe you start wearing the same clothes, जो unfortunately हमारे यहाँ बहुत common है. The second piece is you believe in a particular ideal. But then leadership is not just about ideals, it's also about practicality, right? So what you want is the person that you're talking to buy in to what you're telling them. And once they buy in, then they stand beside you and help you achieve whatever you want to achieve. Excellent. So my leadership, the one that I try and achieve, is to convince the other guy that ये काम हम सब के लिए बेहतर है. वो buy-in है of your idea. रहील, आप मुझे ये बताइए कि जो नई नस्ल है, हमारे यूथ है स्पेशली, क्योंकि वो हमारा एसेट है, हमारा जो यूथ बल्ज है, वो क्या आप समझते हैं 3 ऐसी competencies of a leader कि वो जो हमारे जो future leaders हैं वो इनके अंदर आ जाएं, they really can conquer the whole world. What are the 3 competencies for the young leaders? I think the first thing is perseverance. हमारे यहाँ unfortunately instant gratification की एक mindset बन गई है. Okay. So what you need to tell people is that things don't happen overnight, and if they happen overnight, then they weren't really a challenge. So you need to have perseverance to achieve something in the future, which is not very easy to achieve. True. So higher targets and sticking to the path to achieve that particular target. That's one thing that needs to be inculcated. Perseverance. The second piece is that, as you said, the value system. The value system, in a way, that not everybody is going towards quick profit. There are other things besides profit as well.
जिस तरह होती है ना, vast companies होती हैं where you talk about double bottom line requirements, या triple bottom line requirements. So sometimes maybe making $10 is important. Maybe sometimes making $9 and achieving something else is more important. So that's the kind of leadership that needs to come. And the third piece is figure out a direction. Don't just go on what people tell you on social media. Okay. Learn yourself as well. Nothing happens if you're not, or let me rephrase this. You have all these books around you. Reading the full book makes sense, not just the back page. True. Because that's how you gain knowledge. That's exactly how you'll gain knowledge in leadership also. अभी आपने एक बात बोली कि जो बच्चे हैं हमारे, दे आर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एब्सोल्युटली दे सीख. राहील, मुझे ये बताया कि बच्चों की खासकर नई नस्ल में, इवन बड़ों में भी, हमारी सोसाइटी में भी जनरली जो सबसे बड़ा लीडरशिप जो हमने उस्तादों से सीखा था वो टॉलरेंस थी. एब्सोल्युटली. कि लीडर जितना बड़ा होता है उतना टॉलरेंस लेवल उसका हाई होता है. एब्सोल्युटली. हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस खत्म हो गई जी. राहील, एक सीईओ के हैसियत से अपनी कंपनी में विद इन या ऑर्गेनाइजेशंस के, क्योंकि सोसाइटी भी, कंपनी भी मिलके एक सोसाइटी बनती है, अदारे मिलके एक मुल्क बनता है. तो ये टॉलरेंस का क्या इलाज है? What is any recipe for how we can strengthen tolerance in our young people, even our CEOs that don't have a short tempers? देखिए, इसके दो जवाब हैं. Let me sort of, and this is more the philosopher than the CEO speaking. The first thing is that unfortunately, we've created a situation where we like to confront things. So everybody sort of just comes out and says stuff. अगर आपकी कोई एक particular feeling है, I mean, everyone's entitled to their opinion. Yes. But there is a way of going about saying those things, or there's a way of going about, communicating your opinion to other people with full reverence for the other's viewpoint as well. That is missing. That needs to be inculcated in some way. True. Number two, generally, the way that we've created these, tickers and news headlines and all those things, where everyone's sort of looking for hype. And that's created a lot of, adrenaline rushes all over the place. So you need to create a situation where people calm down. The higher you are in the hierarchy of associations, organizations, various political parties, countries, the more tolerant you need to be. Okay. So it doesn't work if you're sort of threatening to beat people up or creating extremist situations just because somebody doesn't like what you're doing. ये जो हमारी यूथ है, अगेन अपनी टॉलरेंस की आपने इसका जवाब थोड़ा सा दिया. I'll take the coffee. Sure, sir. This is coffee with CEO. राहील, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमारा एक जो वैल्यूज़ है, अभी आपने बात की जी, तो अगेन आपने बोला कि डायरेक्शन भी एक बहुत बड़ा एक एरिया है जिसमें हमारे यूथ को वो नज़र नहीं आता. तो what is the role of the vision and the mission statement, the purpose statement, the meanings of life? क्योंकि we have lost the direction because we lost the vision, we lost our mission. So how we can inculcate this concept, this sense of purpose, this sense of meaning in life, a sense of direction in life in our people? I think the first thing that one needs to do is to figure out exactly what is it that you seek to do in life. It's not about achieving something in the short run. It's about what you exactly want to do in life. Sure. And your life must have some meaning. Meaning? Whatever that meaning is. I mean, it could be, maybe just fixing someone's life. It could be doing good things. It could be turning strategic direction of the country around. But it has to have a meaning. So instead of just having fun and enjoying, live in the moment, I don't think is something that works in the long term, direction setting at least.
Okay, so this is important. Now, one another area regarding the राहील, मुझे आपसे ये चाहिए कि पाकिस्तान के हमारे बच्चों के अंदर या हमारे अंदर एक चीज़ है कि इंडिविजुअली वी आर वेरी टैलेंटेड नेशन. हर बंदा बताता है जी कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है. Absolutely. लेकिन जब वो इंडिविजुअल टैलेंट की बात आती है तो वी आर सुपरस्टार्स. हम पाकिस्तानी दुनिया में जाते हैं, झंडे गाड़ आते हैं, हम हीरो होते हैं. लेकिन हम शाहिद अफरीदी बन जाते हैं, हम इमरान खान बन जाते हैं, हम जहांगीर खान हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल्स हैं. लेकिन जब टीम की बात करते हैं तो वी आर पैथेटिक. वी हैव नॉट लर्न the dynamics of team, how to get along with people, how to work with team. तो ये विनिंग टीम का जो कल्चर है, आप अपने इदारे की एग्जांपल भी दे सकते हैं अपनी, कि how we can have this sense of winning team in companies, in other areas, sports, even home. Your take, sir. देखिए, you're absolutely right. Team building is essential in any situation. Whether it be a business, whether it be a sports, whether it be a country for that matter. Sure. उसमें clear responsibilities have to be very categorically disseminated to people. Everybody should know their role. People tend to assume roles. हमारे problem जो है वो ये है कि आप हर बंदा नंबर 1 बनना चाहता है फ्रॉम डे 1, और वो रूल्स असाइन नहीं होते. सो पीपल स्टार्ट कमिंग इनटू अदर पीपल्स टेरिटरीज एंड देन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिक्स एंड अदर थिंग्स. सो इफ फ्रॉम डे 1 एवरीबडी नोज, ठीक है जी, दिस इज योर जॉब, दिस इज योर जॉब, दिस इज योर जॉब, एंड वी आर ऑल गोइंग टू सॉर्ट ऑफ जेल टुगेदर एंड क्रिएट पॉजिटिविटी. दैट इज हाउ टीम्स आर मेड. As far as individuals and youths are concerned, especially, वहाँ पे तो the good thing is that this is the time that they should be taught team values. Okay. Because देखें, generations, for example, हमारी generation या हमारे बाद थोड़ी सी generation जो है, they're already halfway up there in their careers or whatever that they do. उनको नई चीज सिखाना मुश्किल होगा. But for people starting off, this team building and how to work together as a team should be a compulsory if not a subject, then certainly a focus of whoever is building the team. थैंक यू राहील. एक बीइंग अ CEO, दो मैंने इनकी रिसर्च किया है, 2 CEOs के स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी जो ऑर्गेनाइजेशंस में 2 चैलेंजेस आते हैं CEOs को. एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है, एक एंटरप्रेन्योर्स हों या CEOs हों, वो उनका कैश फ्लो मैनेजमेंट है. कंपनीज की सर्वाइवल का ताल्लुक ही कैश फ्लो के साथ है. और सेकंड चैलेंज होता है रिटेंशन ऑफ द की ह्यूमन रिसोर्स. कि वो लोगों को, अगर सही बंदे को, अगर वो टीम जो हमने डेवलप की, अगर उसे की प्लेयर्स को अगर हम रिटेन नहीं कर पाए तो टीम इस ब्रोकन हो जाती है, और जिसकी वजह से बिजनेस सफ़र करता है. इवन CEO का सबसे बड़ा हेडेक ही होता है हाउ टू रिटेन. तो आप इन दोनों चैलेंजेस को, कैश फ्लो मैनेजमेंट, क्योंकि बच्चे जो नई बिजनेसेस करते हैं उनके पास आइडियाज़ होते हैं, वो कंपनी बना भी लेते हैं, लेकिन वो कैश फ्लो मैनेज नहीं करते, वो आउट हो जाते हैं, या फिर अपनी टीम नहीं बिल्ड कर पाते, वो आउट हो जाते हैं. तो आपकी क्या टेक है इन दोनों एरिया चैलेंजेस को? देखिए, जहाँ तक कैश फ्लो की बात है तो दैट्स क्रिटिकल इन एनी कंपनी सर्वाइवल. गोइंग कंसर्न का इशू जो होता है वो तो होता ही कैश फ्लो से. सो अगर उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा तो फिर कंपनी विल गो नोवेयर. एंड इन एनी केस उसका तरीक़ाकार ये होता है जी कि वेरी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ एग्जैक्टली वेयर थिंग्स आर हैपनिंग एंड प्लानिंग अहेड. As far as human capital is concerned, that is the single biggest challenge that one has. Not only in businesses, but also in various sectors and even the country at large. The right man for the right job. नहीं, वो तो एग्री. रिटेंशन स्ट्रेटजीज के आप अपनी एग्जांपल दें, अपनी ऑरिक्स की एग्जांपल दें या को पुराने तजुर्बे से. The way that we work is कि जी हमारे बड़ी क्लियर परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड स्ट्रेटजीज होती हैं. ओके. If you've done good work, you'll be taken care of and taken care of very well.
And if you do not work, then you know that you haven't worked. So आपका इतना ज़्यादा वो नहीं, आपका ख्याल रखा जाएगा, for want of a better word. And then उसमें आप टैलेंट रेटिंग करते हैं, उसमें आप वेरियस अदर चीज़ें करते हैं. क्रिटिकल जो लोग होते हैं उनके लिए देखते हैं, जो लोग हाई पोटेंशियल होते हैं, who have the potential to go up 2, 3, 4 stages, उनके लिए फिर then you start grooming them also. So all of those strategies come into play once you retain or you want to retain, because you mark people for retention from the role that they do and the potential that they carry, both of them. Okay. So उसकी basis पे then you create career paths also. कि ठीक है जी 3 साल में ये बंदा इधर पहुंच जाएगा, 5 साल में ये बंदा इधर पहुंच जाएगा. एक बड़ा cliched सा question है जो बड़े सारे लोग पूछते हैं interviews में कि जी where do you see yourself in 5 years? But nobody really bothers to hear what the interviewer is saying. The fact of the matter is that's the question that the interviewee should ask the interviewer. Where do you see me in 5 years? Okay. Rather than कि जी आप अपने आप के क्या समझते हैं, वो तो बंदा कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो जो इंटरव्यूअर होगा उसको करियर पाथ शो करना चाहिए कि जी I see you doing this in 5 years. कि मैं आपको यहाँ देखना चाहता हूँ. You're right. What is the role of learning and development? क्योंकि दुनिया में बड़े जितने भी अदारे हैं, हमारी सर्विसेज हैं, हमारे अपना दुनिया में लोग ग्रो नहीं कर सकते जब तक प्रोफेशनली उनकी डेवलपमेंट ना की जाए. जी. तो पाकिस्तान में ये एरिया बहुत इग्नोर्ड है. आप क्या समझते हैं एग्जेक्टिव लर्निंग, एग्जेक्टिव डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्या रोल है आपके करियर पाथ में? देखिए 3-4 इस पे पॉइंट्स I'd like to talk about. The first is it is the organization's role and requirement to train people for whatever it seeks to put that person into as a job. तो कुछ लोगों को आप हायर करते हैं, कुछ लोगों को आप ट्रेन करते हैं एक सर्टेन पोजीशन के लिए. True. और फिर उसको कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में डालते हैं. In my last organization हम 10 दिन साल के क्लासरूम ट्रेनिंग में गुजारते थे. यहाँ पे we make a point and not just in ORIX Modaraba itself, but also within the sector to create training workshops and to ensure that people go to those workshops, various topics to learn about things, to improve their skill set. So एक तो ये organization का role आ गया जी. And LNDP, Learning and Development Program, should be an essential part of all HR activity. हमारे unfortunately HR hiring और payroll से आगे बढ़ने की कोशिश जरा कम ही करता है. इसलिए इसको सॉरी मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, इसलिए इसको नाम रख दिया हुआ है HR का ना, ह्यूमन रिसोर्स की बजाय हांडी रोटी. तो ये तो वही वाला हायरिंग फायरिंग के अलावा इनके पास कोई फंक्शन ही नहीं है. So कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, एक प्रॉपर फंक्शन है. That is which creates the difference between a person good company for that organization, bad company. बल्कि राहील ये कहा जाता है कि यही जो आपका जो पॉइंट है ना, ये जो अच्छी कंपनीज, एक्चुअली उन कंपनीज के बारे में ये कहा जाता है कि दे थिंक लर्निंग एंड डेवलपमेंट L&D जो पार्ट है वो बेसिकली एज ए इन्वेस्टमेंट है. जी बिल्कुल. जो नहीं करते इसका मतलब है कि वो बाय बैकएंड पे उनके दिमाग के अंदर ये फियर है कि ये एक्सपेंस है. तो ये माइंड सेट है अगेन कि ये इन्वेस्टमेंट समझते हैं या एक्सपेंस समझते हैं. देखिए मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ. वन ऑफ द की reasons we're very proud of the entity we work in is the fact that every 2 to 3 years a lot of banks come into our organization and poach people. Okay. Now I could turn this around and say कि जी फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी, मैं सारे बच्चों को ट्रेनिंग कराता फिरूँ, ये करता फिरूँ. But the fact of the matter is they think that our guys are so good that they come in and hire those people at double, triple salaries. So, and that creates your reputation for a good organization to work for. So, वो तो आपकी positivity है. Second, I think on an individual basis भी हर बंदे को कुछ ना कुछ अपनी इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते रहना चाहिए. ट्रू. बिकॉज अगर आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे तो फिर आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे. सर एक कॉम्पिटेंस के बारे में एक रिसर्च है हार्वर्ड की बिजनेस जो है स्कूल एंड हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, वो ये कहते हैं कि कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ CEO नाउअडेज
जो मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो है इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका EQ रादर देन IQ. तो what is your take on the importance of EQ rather than IQ for the position of a CEO? I think I have mixed feelings. Mixed feelings because a lot of places where you talk about EQ, you're actually confused about what is EQ. You try and mix various strengths and weaknesses into EQ, which may or may not exist in certain geographies. For example, यहाँ पे हमारे यहाँ empathy जो कहते हैं, बहुत empathy की बात करते हैं. Empathy is not supposed to be, अगर आप generally देखें, a value that higher management should carry. True, very true. Because यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जी empathy is related to societies where the person talking to you is also on the level. हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी भी एक वो social उसका एक element है. I agree to a large extent on the EQ piece, but I don't think that it's the only requirement that a CEO. It is one of the competence of a CEO कि वो how he emotionally manage अपनी emotions को कैसे manage करता है, and he manages the emotions of others with intelligence. जैसे इकबाल ने कहा था, if you remember, कि लाजिम है दिल के पास रहे पासबाने अकल, कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे. तो इशू तो पासबाने अकल का ही रहेगा. यस, वो बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं ना, ऐसा बड़ा खूबसूरत है. ये तो आज गवर्नमेंट ने 1995 में बुक आई थी और ये इंस्टेंट सक्सेस बन गई और बड़ी दुनिया में चल गया. ये तो हमारा अपना लेगेसी था, जो कि बहादुर शाह जफ़र ने आज से कुछ 150 साल पहले ये शेर लिखा था कि जफ़र आदमी उसको ना जानिएगा, वो कैसा ही साहबे फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा. तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस तो आज से हमारा पुराना ये लेसन है जो हमें आज गवर्नमेंट जो डेलियन गवर्नमेंट पढ़ा रहा है. सर दो शॉर्ट क्वेश्चन सर. जी. CEOs जो होते हैं, उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिसीजन मेकिंग है. वो दे आर ऑलवेज मेकिंग डिसीजंस, आइदर स्मॉल डिसीजंस, आइदर बिग डिसीजंस, क्रिटिकल डिसीजंस, डिफिकल्ट डिसीजंस. तो रहील साहब, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में शादी के अलावा कौन सा डिफिकल्ट डिसीजन था? Okay, Churchill once asked this question. So he said, my most difficult decision in my life to convince my wife to marry with me. I think probably you hit the nail on the head on that one. Difficult decisions होते हैं जी, various difficult decisions time to time होते हैं. Any one particular difficult decision, I suppose business related ही कुछ होंगे decisions जो होंगे. बाकी सारी जगहों पे जिस तरह आपने कहा ना, वो छोड़ देना चाहिए. तो a lot of stuff happens due to emotions rather than thinking and actually decision making. So I think I'll skirt that issue. Okay. Sir, your inspiration, राहील की inspiration क्या है? Living role models especially. Living role model. Yes. एक होते हैं ना, हम पास से ही करते हैं अपने role models. मैं हमेशा कहता हूँ रोल मॉडल्स वो होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं. देखिए, रोल मॉडल्स की जहाँ तक सिचुएशन आती है ना, तो यू मिक्स एंड मैच वेरियस पीपल हर अपनी सिचुएशन में या अपने एरिया में. एब्सोल्युटली, यू लुक एट वेरियस पीपल इन टर्म्स ऑफ सिचुएशंस. पर्सनल लाइफ पे आप किसी और को देखते हैं, और यू नो essentially so I'm not going to go into cliche territory and name a few people. I'll just say कि जी there are certain role models. I look to my family for role modeling as well. Okay. But in my view, I put various slots and then make models for that. कुछ जगहों पे जहाँ पे अपराइट होना पड़ता है, वहाँ पे रिलीजियस रोल मॉडल्स आ जाते हैं. जहाँ पे आपको सर्टन वे ऑफ वर्किंग दिखानी होती है, वहाँ पे कुछ और कंट्री के बानी टाइप के रोल मॉडल्स आ जाते हैं. सो देयर आर वेरियस रोल मॉडल्स इन वेरियस स्लॉट्स.
ओके सर, वर्क लाइफ बैलेंस एक सीईओ का सबसे बड़ा जो मुश्किल जो टेरिटरी है वो उसकी जस्टिफिकेशन है, वो वर्क लाइफ बैलेंस को जस्टिफाई नहीं कर पाते यूजुअली ये रिसर्च। आपकी राहील साहब के वर्क लाइफ बैलेंस की क्या सिचुएशन है? मेरी जी अल्लाह का बड़ा करम है, मैं आई डोंट कंप्लेन। द रीज़न फॉर दैट इज़ वेरी सिंपल। आई हैव started using technology to enable movements and all that. मुझे ऑफिस में सुबह से लेके रात को बैठने का कोई शौक नहीं है। What I do is my job is primarily to link relationship with regulators, with clients, with associations. I'm also the chairman of the NBFI association. उधर भी we're building capacity and काफ़ी हम काम कर रहे हैं। So I can be out of the office and still take those decisions that need to be taken, and I can still manage to attend most of the meetings. I don't have to be physically in the room. I can do video conferencing. So इसकी वजह से काफ़ी आसानी हो गई है। Second, we've also tried to move towards a lot of paperless sort of activities. उससे ये आसानी होती है कि you don't need to be physically present to read lots of files. Things come to you, you read them, you take your decisions, you consult with people, all of that. So, Allah ka karam hai ji, I have no complaints on the work life. So, family, bache? Ji, I have two children. My son works abroad. Okay. He graduated last year. He works with the Barclays Group. My daughter's studying, so she's also abroad. So it's only myself and the wife who are home. Excellent. तो हमारी काफ़ी एक्टिव और सेंसिबल लाइफ रहती है। कहा जाता है कि एक सीईओ, एक अच्छी कंपनी का सीईओ एक एवरेज कोई 50 to 60 बुक्स पढ़ते हैं एनुअली। जी जी। तो पाकिस्तानी लोग तो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन सी लेवल को मैं एग्ज्यूम करता हूँ कि वो क्योंकि जिस पोजीशन पे हैं तो ज़रूर एक रीडर होंगे, क्योंकि रीडर्स आर द लीडर्स, ये कॉन्सेप्ट है। तो आपकी क्या एवरेज है? कोई किताब पढ़ते हैं और कोई एक आधी किताब का नाम बताइए जो रियली फील के ये हर बंदे को पढ़नी चाहिए। That's a good question. That's a very, very good question. मैं जी I'm an extremely addictive sort of reader in that sense that I read close to 4 to 5 books a week. 4 to 5 books a week. 4 to 5 books in a week. Okay, wow. और अनफॉर्चुनेटली मैं एक किताब को एंड टू एंड एक साथ ख़त्म नहीं करता। मैं एक साथ 2-3 किताबें भी पढ़, ऐसे ही होता है यूजुअली, दैट्स माय प्रैक्टिस। वो भी पढ़ लेता हूँ। माय की इंटरेस्ट ओवर देयर ऑब्वियसली आर करंट अफेयर्स एंड आई रीड अ लॉट अबाउट कंपैरेटिव रिलीजन एज वेल, ऑन हिस्ट्री, इस तरह की चीज़ें मैं काफ़ी पढ़ता हूँ। द बुक दैट एवरीबडी शुड रीड, that's a tricky question. That's a tricky question because I think उस तरह की किताबें चेंज होती रहती हैं. Again, I'm reading a book these days which is on religion. It's essentially giving you an understanding of how extremism was sort of built in the last 200-300 years into a society. उसको भी आप पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री की किताबें भी पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट की किताबें भी पढ़ सकते हैं। I'm not going to name things like the monk who sold a Ferrari or whatever, because these are all cliches. ये build to CEOs का एक बड़ा FAQ होता है, ये कि ये जी build to last है जी, या ये इस तरह की 2 दिन किताबें हैं। ये सारी किताबें पढ़ ली हैं, ठीक है, हो गई कहानी है। Now let's move on to the next level. राहील साहब, इस सारे तजुर्बों में ज़िंदगी के 25-30 साल का जब सफ़र होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, तो एक इंसान एक इवॉल्व करता है अपनी ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। कोई एक तो होती बोरो डेफिनेशंस होती है, उसने ये कहा, फलां स्कॉलर ने ये कहा। तो एक बंदा जब तजर्बों की भट्टी से गुजर के एक पोजीशन पे लाइफ में उस मेच्योरिटी लेवल पे आता है, जिसने अभी कहा कि वो सारी वो सेल्फ हेल्प सीरीज़ की किताबें एक स्टेज होती है, वो अच्छी लगती हैं, गुजर जाती है। तो आज अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द सक्सेस मंत्रा या सक्सेस रेसिपी ऑफ राहील कमर इन 3 की वर्ड्स, फ्रेजेस? सर, ओवर टू यू सर। Add value. Whatever you do, add value. Success is adding value. Adding value. Value can be anything. Commercial terms में
value can be share price, it could be profitability. On EQ terms, it could be helping people achieve a certain career path, creating organizations, leave a legacy. Everywhere you go, you need to leave a legacy, and the legacy. At the end of the day, it matters. It does absolutely matter. Because you want people to say that you spend this time here, and you did something that created positivity for the organization or association or whatever that you're working in. And the third piece is be true to yourself. Excellent. Don't try and imitate other people. वो बंदा थक जाता है. थक भी जाता है. Plus you can't keep up. वही ना. So what you do is कि ठीक है जी, you decide कि जी ये आप कर सकते हैं, इस तरह आपने करना है, कर दें, फिर आगे देखें क्या करें. मेरी डेफिनेशन पे आपके करीब है. मुझसे अक्सर पूछते हैं जस्ट योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. मैं इट इज नॉट व्हाट यू गेट, इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट यू बिकम. एब्सोल्युटली. एट द एंड ऑफ द डे एब्सोल्युटली आप क्या बन जाते हैं, ना कि आप क्या हासिल कर लेते हैं. और वो आपके उसमें भी नहीं होता ना. A lot of things happen not because you're doing it, it just happens. Circumstances create those situations. अभी जस्ट 3 दिन पहले आपने मुमताज़ मुफ्ती की किताब, क्योंकि उनकी बरसी थी, उनको हमने ट्रिब्यूट पेश किया. तो उनका ये जो एक खूबसूरत जो उसका जो लेसन हमने लर्न किया यही था कि जो ज़िंदगी का जो हासिल है कि सब ला हासिल है. बिल्कुल. जिसको हम समझते हैं कि ये बहुत अचीवमेंट्स हैं, वो एंड पे बंदा कहता है यार कुछ भी नहीं. पता है एक और मज़ेदार कहानी होती है. When you create these stage by situations, you achieve something, and True. then you say यार ये तो हो गया. So what's next? This wasn't really worth the effort. सैचुरेशन आ जाती है. Absolutely. So you go into something else. So वो आपकी एक साइकिल चलती रहेगी, उसको आप कुछ नहीं कर सकते. सर, योर आइडिया ऑफ हैप्पीनेस. Satisfaction that आपको कोई खड़े होकर गालियाँ नहीं निकाल रहे. That is happiness, in my view. That's a very political statement, by the way. ये कंटेंटमेंट है बेसिकली एक तरह की कंटेंटमेंट है. सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वीमेन एम्पावरमेंट किसी कौम की तरक्की, किसी इदारे की तरक्की में, क्योंकि हमारी बच्चियां पढ़ गई हैं बहुत, आपने कहा आपकी बेटी भी माशाल्लाह पढ़ने गई है, तो ख़वातीन की, फीमेल्स की पार्टिसिपेशन एम्पावरमेंट के हवाले से, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से, व्हाट इज़ योर टेक फॉर दिस कंट्री सर? देखिए सी 3 अगेन आई कम बैक टू माई 3 पॉइंट्स. एक तो ये कि ख़वातीन नॉट ओनली मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, दे आर द वंस दैट एक्चुअली चेंज द पॉपुलेशन, बिकॉज उन्हीं के वैल्यूज़ को ट्रांसलेट किया जाता है इनटू द यूथ. उन्हीं के पास वो होती हैं, तो वो उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी. नंबर 1. नंबर 2, इन द वर्क प्लेस, if you see passion, you know there's a difference between a male employee and a female employee. The female employee will always come to you with something that they feel passionately about. Things that they'll do at more depth. The general male attitude is a little more superficial. So it's a shame कि ये वाले लोगों को जो काम करना चाहते हैं आप chances नहीं दे रहे, because you have weird thoughts कि नहीं जी ये 2 साल में चले जाएंगे या 3 साल में चले जाएंगे या whatever. So women empowerment has to happen in the workplace as well. Third, decision making. I think the best decision makers are women. They should be put up there to make decisions. And if they're not there yet, at least their input should be part of a lot of. लेकिन राहिल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये जेनरिकली तो यू आर राइट, बट इन स्पेसिफिकली इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड स्पेशली, आई हैव नॉट सीन द वीमेन इन द टॉप लीडर पोजीशन. और ये बहुत आप देखें बैंकिंग में सिर्फ एक आधा नाम आपको मिलेगा, FMCG में पूरे सेक्टर वाइज सेक्टर में जाता हूँ, देखता हूँ, हम बुक्स पे रिसर्च करते हैं, ख़वातीन को ढूंढते हैं, जो बिजनेस वीमेंस हैं वो मिलती नहीं, वो तो सेक्रेटरी रोल से आके उनको लेके नहीं जाया जाता. एक की जो इस वक्त चैलेंज है, दैट इज टू फाइंड women directors for the board. Yes, board में directors नहीं, yes. And you're right. You know, if certain stature के जो लोग हैं, उनके इतनी वो है. Competence level या उनका वो उसका नहीं grooming हुई भी, और ये एक long term है, एक दिन में तो हो नहीं जाता. So that's why I said, no, you this is an area for yes. You need to train them. You need to create that situation where they stay in the workforce also. Yes. ताकि वो डिसीजन मेकिंग के उस रोल पे आ सके जहां उनका इम्पैक्ट हो, उनकी प्रेजेंस का.
सर लास्ट क्वेश्चन, राहिल साहब, न्यू गवर्नमेंट आ गई नए विजन के साथ और पाकिस्तान नया पाकिस्तान के हवाले से, एक सीईओ के हवाले से एंगल से, अपनी कंपनी के कोई अपनी इंटरेस्ट के हवाले से, कंसर्न्स के हवाले से आप क्या देखते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में? क्या ऑप्टिमिज्म अपना शेयर की? चैलेंजेस बाकी तो हमें मुबशर कुमार रोज़ बता देता है कि ये पाकिस्तान ने निकल रहना, आपका क्या ऑप्टिमिज्म अबाउट पाकिस्तान? मेरा ऑप्टिमिज्म ये है जी कि certain people who are running, especially हमारी इंडस्ट्री से मुतालिक जो लोग हैं वो खुद इस तरह की इंडस्ट्रीज में रह चुके हुए, ठीक, सो उनकी अंडरस्टैंडिंग आई वुड सपोज वुड बी स्लाइटली बेटर देन अ नॉर्मल पॉलिटिशियन इन दैट पर्टिकुलर रोल. नाउ इन द लास्ट गवर्नमेंट, whilst the understanding was very good, the issue was that the incumbent finance minister, for example, or other people were very, very busy doing a lot of other things. इधर डबल टियरिंग, 3 टियरिंग है, जिधर आप इंगेजमेंट आपकी थोड़ी बेहतर होगी. सो उस सेंस में एटलीस्ट आई सी ऑप्टिमिज्म इन आवर इंडस्ट्री. इट्स अ स्टेटेड गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव टू encourage Islamic finance in this country, and it's a no-brainer. 98% इस्लामिक पॉपुलेशन में इस्लामिक फाइनेंस तो बढ़ नहीं बढ़ना. सो उसकी इनेबलमेंट कर दें, बहुत सारे काम इधर हो जाएगा. सो आई सी ऑप्टिमिज्म. एज फार एज जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन गोज, अभी तक तो चैलेंजेस बहुत सारे लोग दिखा भी रहे हैं, बट कुछ पॉजिटिविटी भी मुख्तलिफ जगहों से नज़र आ रही है. एंड देयर आर वेरी sensible people at the helm also who are managing at least the trade piece, a few other pieces. Again, the issue is how quickly the executors of the policy buy in. That's where the leadership comes in. True. Sir, message of hope for the young people, for the young CEOs, for the future leaders. This country is the best thing that's happened in this area for ages and ages and ages. You know, it's a beautiful country, full of all sorts of potential. With such a great population, all you need is direction and just fixing a few things. As I said, persevere, do things here. There's no point going anywhere else. Do things over here and you'll succeed. You'll do very, very well. Thank you very much, sir. राहिल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया.